Good morning, friends. Welcome to Thursday mornings. So we are looking for a deep red opening based on the US sell-off that happened overnight. US sold off because of bad retail sales data from Target low, etc., and then the tech sell-off followed. US we had a few references: 4120, 4035, which was supposed to be a support, and then that broke through, it had been a support for some time. We are below 4035, we are below 3975, two major references. Okay, so any pullback to 3975 is going to be a resistance for US. Okay, so that is a bit of a framework for us in terms of how global market might play today. Now coming to our markets, आज का हमारा मार्केट देख लेते हैं. कल इफ यू सी हमने एक ग्राफ शेयर किया था, एंड ये जस्ट स्टडी के लिए भी अच्छा रहता है कि वन जोन टू वन अनदर जोन जब मार्केट मूव करता है, वी सेड दैट 350 रीजन कैन बी एज रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, एंड वी आल्सो रोट इट रियल टाइम, आई थिंक, कि यहाँ से थोड़ा पॉज मार्केट ले सकता है. ठीक है, सो वंस 350 वाज हेल्ड, आई थिंक मार्केट्स फेल बैक एंड देन कंसोलिडेटेड इन दैट जोन. Okay, so there was a bit of a consolidation at around 250 to 60 regions when we paused there. Bank Nifty also similarly 34 550 600 we were expecting. I think वहीं पर top किया, and then from there on it fell, and then formed some sort of a consolidation at the lower levels. Now अभी gap down expected है. So basis the gap down, अगर आप देखेंगे निफ्टी, अगर मैं एस जी एक्स निफ्टी देखता हूँ तो 950 900 is where it is. एस जी एक्स निफ्टी is likely to open. Okay, so SGX Nifty is likely to open at 5900 regions. So वहाँ पर we had a bit of a support early on. So अभी हमें क्या करना है कि objectively analyze करना है what markets can do at this point. Don't panic with any gap up or gap down. You objectively analyze, adjust your positions, or take your trades. So if you see this week's, when it was at a lower region here, prices did a bit of a consolidation. यहाँ थोड़ा volume है. So until my take here is until 850 levels, 800 roughly 850 holds, we should see some sort of a support here for some sort of bounce back. At the same time, 16,050, 16,055 will now be a resistance again. So any pullback to this region will look to short, and until 850, 800 holds, we can look to long for some sort of a pullback trade. Okay, below 800, 850, I think then we can expect a severe sell-off in our markets as well. So watch for 800, 850 region in Nifty as a key level of reference. Okay, if you see the Nifty weekly chart देखेंगे अगर, तो हमारा वी फेल टू मेक गेट पास्ट जो प्रीवियस वीक का टॉप था 16,400 निफ्टी में, हम वो टेकआउट करने में ना सफल रहे. सो एसेंशियली अभी फिर से वी आर बैक इन टू दिस जोन वेयर 850 800 इज अ की रेफरेंस वी वॉच. ओके, बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली 34 800 प्रीवियस वीक का टॉप था, वो हम टेकआउट नहीं कर पाए हैं. तो बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल पे हम यहाँ पर वॉल्यूम है अगर देखेंगे 33 700 650 एरिया पे, वहीं पर एक्सपेक्टेडली ओपन हो सकता है. अगर वहीं पर ओपन होता है 33 आपके 700 से 650 रीजन पे, अगर वहाँ पर ओपन होता है तो थोड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कीजिएगा. वहाँ से पुल बैक के लिए, पुल बैक में 34,000 areas will be a resistance. यहाँ पर we'll look to any pullback to 34, we can look to sort of take a short side view, and any pull, and on the downside I think 650 700 support. अगर 650 700 के नीचे ट्रेड करता है, then we looking for a deeper move to 33 400 or even lower. Okay, so हमारा basis 33 650 700 रहेगा. ठीक है, एंड ओपनिंग डेल्टास को ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग है, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि मार्केट्स कैन रोटेट और कैन नॉट रोटेट हायर, ओके, और लोअर फ्रॉम देयर ऑन. Okay, so until I think look for these levels and see if we can, our markets do our own thing, or we just, move on from a sell off, because there will be some, players stuck at higher levels as well. ओके गाइस, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. कल के ऑर्डर फ्लो में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगेन प्रीवियस ये ऑर्डर फ्लो रेंजेस ही हैं 34,000 16,650. यहाँ पर पुल बैक पे हम शॉर्ट करने की भी कोशिश करेंगे. आज ओवरऑल वीकनेस रहेगा. आई थिंक व्हाट विल हैपन इज once we gap below these 16,000 कॉल rating and 34,000 कॉल rating will start happening. So वहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है. ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे.